You are not ready for this. वैसे मैं आया था यहाँ पे ट्रैवलर को थोड़ा सा पैरो ट्रैवलर बनाने, क्योंकि पैरो जो नए वाली क्वेस्ट में कुछ ज़्यादा ही अच्छी चल रही है। जब उसका पैरो वाला वर्जन कुछ ज़्यादा अच्छा चल रहा है तो उसे लेके चलते हैं, मज़ा आएगा। वेर इज माई ट्रैवलर ट्रैवलर ट्रैवलर। मैंने ट्रैवलर कहीं लगाया ही नहीं है भाई, मतलब कहीं तो होना चाहिए। किसी भी पार्टी में ट्रैवलर नहीं है। ये फालतू पार्टी है। तो वेर इज माई ट्रैवलर। There's still a long road ahead. डिप्लॉय हो जाए भाई, डिप्लॉय होने में भी अलग ही है इसका। ये रेजिडेंस विद ट्रैवलर, पहले बहुत जब पहले मैं आया था तो मुझे रेजोनेट करने आता ही नहीं था। मेरे को एक कोई तो आया था, कोई लड़की थी, बोल रही थी कि वो वाला बना लो, क्या बोलते हैं, नाम नहीं आता रहा यार, बहुत अच्छा ही था कुछ तो। अपने को वहां पे जाना है। हाँ, जियो नहीं, क्या नाम था यार, डेंड्रो में, डेंड्रो स्किल लेने को बोले थे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। फिर बाद में किसी ने तो बताया कि ऐसा ऐसा करने पे हो जाता है। क्या है, 42% कुछ तो है। देखते हैं ये है क्या। इसे हटा दो तो। ओ, ये अब जरूरत ही नहीं है भाई, रहने दो। ओके, नॉट बैड। डैमेज दूंगा तो भागेंगे, भाग ही जाएंगे। थर्टी 1% पे आ गया। वो जो नीचे है कुछ 30% आ गया, वो है क्या वैसे, पता नहीं क्या है। 29%। कुछ तो है, समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो है। 28%। आई थिंक हम यहाँ पे वो सीन नहीं, डायरेक्ट अंदर एंट्री मिल गई है। मुझे लगा फिर से पाइमन दब के मरेगी। Mm, mm, mm. Mm, 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 mm. 162 है वैसे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इतना तो।
ठीक। ओ उस दिन सुकुना के वर्ल्ड में यही सेम चीज कर रहे थे, मुझे लगता है कि वो कॉप में नहीं होने वाला था। ये है क्या वैसे? बेसिक हीट सोर्स। ओ मतलब इसको लगा के हीट ले सकते थे, इसी की वजह से तो उस दिन मरे जा रहे थे बार बार। ओके। न्यू आइटम Construct चेंज blueprint कैसे added करेंगे to वैसे? records. You may now execute the command ओ Build 3। Heat Source. Generate a ओ temporary ऐसा। heat source to rapidly melt the solid ice. ठीक है ठीक है। अब आई थिंक इसको तोड़ना है। उस दिन उसके वर्ल्ड में टूट नहीं रहा था क्योंकि कोऑप में थे। क्या करना है? आई थिंक ये हीट सोर्स का यूज करना पड़ेगा, मतलब हो सकता है। हाँ 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 हाँ। ये बेसिक हीट सोर्स क्या लिखा हुआ है? मतलब ये क्या कुछ लेवल्स वेवल्स है क्या? तो इतना ही छोटा होगा। लेट्स गो। यहाँ से तो निकल ही सकते हैं। ओके। ऐसे पूरे पिघला देगा? जरूरत ही नहीं है वैसे तो। जाना किधर है? ओ इधर जाना है। ये खत्म तो The नहीं हो scan जाएगा ना? पता चल indicates रहा the है खत्म हो path जा is रहा straight ahead. I recommend we proceed. है। ओ इसे पिघलाना आई थिंक। एक मिनट। यप। क्या बोल रहा है? 40%? ओ मटेरियल्स कम है। 25 चेयर मेरे पास 5 ही है। अरे मिलेगा कैसे? ये मिलेगा कैसे? ओ ऐसे मिलेगा। ओके मतलब मटेरियल्स भी लेके आने हैं। बहुत बढ़िया। कहाँ है ये? एक हीट सोर्स है। ओ इसको ले लेता हूँ ना। मतलब एक टाइम पे एक ही हीट सोर्स लगा सकते हैं ऐसा? चलो फिर। गायब हो गया। यहाँ से आग उठाई, पिघलाते हुए धीरे 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 चलते हैं। मुझे लगता है इसकी कोई रेंज लिमिट है। फ्लेम अबाउट कुछ कुछ तो रेंज लिमिट है, वो लेके आते हैं। मटेरियल सही है, मतलब हर बार कुछ ना कुछ लेके आना पड़ेगा। यहाँ से पीछे के साइड तो जा ही सकते हैं, वो सारी चीजें कलेक्ट करके आते हैं। ये मटेरियल्स है आई थिंक। हाँ पिछली बार साला कलेक्ट कैसे किया था ये भी? एक मिनट, इससे कुछ तो कलेक्ट किया था ऐसा। नहीं, तो इसको तोड़ देते हैं। ओके 40 हो गया, बढ़िया। कीप इट अप मैन। ओके ब्रो। देखते ये ले सकते हैं ना? मतलब ये ब्रेक कैसे होगा? ऐसे कुछ? ये तो ये ब्रेक कर रहा है, होगा ही नहीं ऐसे में। देखते हैं भाई, देखते हैं। मतलब हो तो जाना चाहिए। थोड़ी बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। 3। यप हो गया। यार ये तो गलत है। मुझे लगा था भाई फ्री के लग रहा है, जितने चाहिए उतने लगा लो। ऐसे तो सारे रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे। फ्लेम का वार्निंग भी आ गया।
लेट्स गो। फाइनली यहाँ पहुंचे। तो यहाँ पहुंचने में इतना टाइम लग गया, ये क्या है? Kresnik crystal located. Please collect at your earliest convenience. The recent construct you built provides highly efficient heating by utilizing the unique properties of Kresnik crystal. हेलो अजीत, स्वागत है तेरा हमारे लाइव स्ट्रीम में। Unfortunately, prime और भाई ice साहब, constructs have a very काय करते हो short तुम ये? lifespan and cannot be stabilized during the development period. Hence, the authorization to use Kresnik crystal was granted. That said, I have already forgotten what warmth feels like. ये क्रिस्टल को हमें कलेक्ट करते हुए Perhaps चलना है, then हमारे we काम can आएगा warm फ्यू ऐसा ourselves फ्यूल। by the fireside together. ठीक है भाई, समझ गया, रहने दो, But for ज्यादा now, मतलब समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई कलेक्ट ऊपर बाहर आया, हीट का बाहर है, फ्रोजन का बाहर है, ठीक है। low power. Please use Kresnik crystal to replenish energy reserves. Signs of physiological activity detected in the distance. डोंट से दैट। It is highly likely to be your travel companion, Paimon. Go. Go now. Be reunited and sing together. May all the people be united as one. May all of life rejoice in unison. Approaching the target location. Scanning for signs of life. Life forms detected. 2. Affirmative. However, that is not the reason for my confusion. According to my database, this location is a train station, meaning the number of life forms is unusually low. Real-time environmental data suggests that the train station may no longer be in use. But whatever the situation, please exercise caution. Paimon! Who are you? Don't worry. She's only sleeping. You must be the Traveler. She called your name repeatedly while attempting to battle her way through the blizzard. Newcomers to Snezhnaya struggle to adapt to the sheer cold at the best of times. Lately, even the locals are suffering, with a powerful monster having summoned a bitter snowstorm. You two must be very important to one another. You should take more care not to get separated. Your eyes. Are you Conrian? There are indeed some Conrians left in this world who survived the cataclysm. But I doubt that is news to you. It would be unwise to interrogate my identity here. Focus your attention on your travel companion instead. We will meet again very soon. The unidentified subject has now left the area. He appears to be an individual of great significance, but my search has yielded no relevant data. I will try searching the database again. Against the odds, your companion is safe and sound. The other person even left a blanket for her. Traveler! Oh, thank goodness you're okay. Paimon was so worried.
It's okay. Take it easy. Are you feeling alright? Pretty much the same as when we first got to Snezhnaya. Paimon must have caught a cold. She was feeling so faint. She just couldn't keep going any longer. So she had to lie down and sleep it off. Wait, where did the jester go? Yep, the director of the Fatui. The Jester Piero. So, you met him? The Jester must know everything about the Tsaritsa's plans. But there's no way he'd tell me just like that. We might well have ended up clashing. Well, he was right about one thing. Right now, the most important thing for me is to take care of Paimon while she's unwell. He had no intention of explaining his motives, and he left in something of a hurry. Hey! What the... Who is that? It looks like... half a pair of goggles. How amazing! A self-aware, talking pair of goggles! Snezhnaya was once the land of the Fae. There are many ancient creations here that I'm sure would broaden your mind further still. Mind you, my database is also expanding as we speak. You must be a rare creature yourself. Oh, wow! Well, thank you so much. You've earned yourself some of Paimon's favorite candy. Oh, but by the looks of it, you probably can't eat that, can you? Goodwill detected. Instead of candy, perhaps I can suggest my preferred strategy. Please clean me regularly to keep me operating at peak efficiency. Oh, that makes sense. Every pair of goggles needs wiping clean once in a while. Sure thing, mister. Anyway, back to the Jester for a second. Paimon's still confused about something. When he first showed up, he already knew Paimon's name. And he acted like he expected Paimon to know who he was, too. Paimon could tell that he was Conrian from his eyes. And he definitely seemed like someone pretty important. But beyond that, Paimon didn't know anything about him. It was only later, after he rescued Paimon from the snow, that he properly introduced himself. That's the only reason Paimon knows he was the Jester. Oh, seems unlikely. He ran into the snow following the sound of Paimon's voice, with a really anxious expression on his face. He didn't act like someone who knew she would be here in advance. And after bringing Paimon here, he just stared out at the snow. He didn't do anything to Paimon at all. In fact, he barely said anything. Wouldn't even answer any of Paimon's questions either. Paimon didn't feel unsafe around him, and he didn't seem to have any ulterior motives. For all we know, he might have just ignored Paimon's questions so she'd give up and go to sleep. Please allow me to interrupt. Fatui and director are unfamiliar terms. May I ask for clarification? Wait, you've seriously never heard of the Fatui? Oh, they're like the Tsaritsa's inner circle. Really powerful people. And the director is their boss. Understood. Since they hold elite positions and serve their god directly, it stands to reason that they would conduct themselves with due decorum. I am inclined to agree with your assessment, Miss Paimon.
I did not detect any ill will from the gentleman in question. Sorry, I shouldn't have encouraged you to talk so much. Paimon, new plan. Let's get out of Snezhnaya for now. We can come back after the weather clears up and you're all better. The Jester mentioned that this snowstorm, being the work of a monster, is worse than most. Even if we made it to Snezhnagrad, we'd still have to wait out the storm before we could do any exploring. Oh, well, it's really nice of you to look out for Paimon, but she doesn't want to hold you back. We were really psyched up for this journey when we first set off. Just think of all the burning questions we have. If we turn back now, who knows how long it'll take before we finally get answers. Further information is required regarding the monster situation. But objectively speaking, there is another, more pressing issue at hand. At this point, we have traveled a significant distance into the blizzard. Were we to turn back now, the road would be extremely treacherous, especially since we would need to travel on foot. If, however, we continue onward, there may be a better solution. Do you remember what I said as we neared this location? I told you that this is a train station. While it has evidently fallen into disuse for unknown reasons, the tracks remain intact. We can break through the blizzard and forge ahead by driving a train. That is the Snezhnayan way. There is a small town up ahead, which would be the perfect place for Miss Paimon to rest and recover. Paimon thinks Goggles here makes a great point. Let's do that! Oh, come on. Don't worry. Think of all the traveling we've done so far. When has Paimon ever gotten sick before? Practically never. 'Cause she's in great shape. Sure, she's a little tired right now, but it's sure to clear up on its own. Affirmative. Should you ever need my assistance during your future adventures, please call for the Eye of Grey whenever you wish. Otherwise, I will remain silent to avoid causing any unnecessary distraction. Now, please follow me to the train tracks. Is this an answer from this world? Please confirm when you are ready to depart.
heading north from here, we will soon arrive at. देख भाई मस्त एनिमेशन चल रहा है Wait, अभी। there's an अभी अभी error ट्रेन बुलाया है message. मैंने। Could not detect clear tracks. What exactly does clear mean? Brace for impact, friends. Preparing to enter impromptu flight mode. ये ट्रेन दबी हुई थी और अभी अभी निकली है। कुछ तो क्रेजी लग रहा है। हाँ नया रीजन अनलॉक हुआ है, देखते जाओ बस। तुम लोग कुछ तो व्हाट्सएप पे How बकवास कर रहे थे, strange. तो फिर Not मैं only was लाइव the कर रहा station's था तो मैं अपने status different क्वेस्ट पे from our ध्यान दे रहा था, records, तो मैंने क्या but किया, even डोंट the डिस्टर्ब मी मोड railroads ऑन कर and दिया। the terrain itself have changed क्या चल क्या रहा था? substantially. अगर कुछ इम्पोर्टेंट चल रहा है तो वो देख के आता हूँ। Yeah, रुक जा देखता हूँ, ऊपर ही thanks to मैसेज your पड़े हुए quick बहुत सारे हैं। reflexes. My sincere apologies for putting you in danger. I'm afraid I'm as confused by all this as you are. बता फिर, इसको यहीं पे स्टॉप करके देख के आता हूँ क्या चल क्या रहा है व्हाट्सएप पे। एक फोटो वोटो आई है कुछ तो, रुक जा देखता हूँ। किधर गया ये? लास्ट मैसेज मेरा ही था, गुड मॉर्निंग है, उसके बाद का देखता हूँ। कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी बातें करी है भाई। हाँ ये रही फोटो। तो इसने एक फोटो भेजी थी, मस्त कॉमेडी चल रहा है। एक मिनट रुक जा देख के आता हूँ फिर। लाइव पे व्हाट्सएप खोल दो क्या? उतने की सोच रही है क्या? हाँ आ जा तू भी। आ रहा हूँ। अजीत आ गया पर नदी गंदी हो गई तो मेरे वो तेरे पापों से नदी मैं पाप बहुत किया। पापों से नदी गंदी ना हो इसलिए जा तो पहुंच जा मेरी जगह। ठीक है रुक जा, व्हाट्सअप यहीं खोल देता हूँ, क्या ही जाता है। वैसे भी व्हाट्सएप में कौन सी बंदी की फोटो लगा रखी है भाई। आ जाए एक मिनट रुक जा। वेयर इज माय व्हाट्सएप, बस किसी का नंबर वाला ना निकल जाए, क्योंकि सबके तो नाम लिखे ही हैं। नो वो कुछ तो ये रहे दोस्तों हमारे कांटे। और वैसे भी कुछ रिवील नहीं होता, कुछ ज्यादा ही मैसेजेस कर रखे ये लोगों ने। तो आओ मैसेजेस का रिव्यू करते हैं। कल इसने मुझे मैसेज किया था गेम में आने के लिए, तो मैंने अभी तक देखा नहीं है। तो लड़कियों की कमी नहीं है हमारे पास। ठीक है, कहाँ गया कहाँ गया? कुछ भूल रही थी क्या? कूदने की सोच रही, ये पढ़ा तू कूदेगा तो तेरे पापों से। फोटो का फोटो खोलना वरना दिखेगा ठीक नहीं लगेगा। अरे फोटो खुलेगा नहीं, व्हाट्सएप पे फोटो खुलता कहाँ पे है? बस जो भी है सारी बहनें हैं। हाँ जो भी है सही बात है। क्या लिखा है? ओके जाता हूँ। पर नदी गंदी हो गई तो मेरे पापों से आज आजकल बरसात है तब हो रही। ओके जाता हूँ, इसने ओके जाता हूँ क्यों लिखा है? बढ़िया है। अब ये कौन सा आ गया हमारे ग्रुप में? ये कौन आ गया हमारे ग्रुप में? ओ भाई ये पापी लोग कहाँ से आते हैं भाई? पता नहीं मैं, ये दोनों आपस में क्यों लग गए हैं? देख एक पापी ये भी है, ये कौन आ गया ग्रुप में? वो और एक तू। हम्म अजीत सोच रहा है ना कि उसकी भी बात की जाए ग्रुप में, लेकिन तुम लोग उसको इग्नोर कर रहे हो। उसके दो चार मैसेज उसको इग्नोर कर दिया यहाँ पे। कुछ भूल रही है क्या? मैं पापी था नहीं, इसने इस इन संसार। वाह भाई, जैसे कुछ ज्यादा ही गलत हो रखा है तेरे साथ। हाँ बुला ले भाई, तुम लोग मेरे लाइव पे चैट करो, पढ़ते भी रहूंगा, क्वेस्ट भी करते रहूंगा। ये अच्छा रहेगा। इंसानों की बात कर रहा था तो सुअर है।
अजीत भैया आप बताओ, ये वो आ गया न्यू मेंबर, मालूम नहीं। मेरे को बोल रही क्या? देवी बहन आप बताओ ये कौन है? सिनोबू? ये सिनोबू तो है ही नहीं। वो चल बे न्यू मेंबर, अपने इंट्रोडक्शन दे इनको। सही में पता नहीं कैसे मैं तो। रुक मैं आती हूँ, फिर बताना। मैं तो न्यू हूँ। मैं तो न्यू, तू ही है ना यहाँ पे? हाँ, संस्कारी टाइप में यहाँ, तेरी तरह। किसी, किसके लिए हूँ न्यू? ओ किसके लिए न्यू हो? ये लोगों के लिए न्यू हो? इसे नूब है क्या? देख, मेरे को मजा आना चाहिए। 3 साल से जानती हूँ इस ग्रुप में मेंबर को। इस ग्रुप के मेंबर को 3 साल से जानते हो ऐसा? सुगुना तो 1 साल पहले ही मिला है, 3 साल से कैसे जान रही है सारे ग्रुप के मेंबर्स को? और ये खुद 3 साल से नहीं खेल रहा है, इसे 3 साल से हमें कैसे जानता है? 4 साल तो पवन में तेरे को तो जानता हूँ। ये पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन करके 3 साल बता रही है इन सूर्य के लिए। अब मैं क्या बोलूँ? आधे लोग मेरे को ब्लॉक कर देंगे। क्यों ब्लॉक कर देंगे भाई? हरकत ही ऐसी है। बोल बोल। ये भाई, ये कहाँ की बातें कहाँ लेके जा रहे हैं? ये लाइन पढ़ूंगा ही नहीं मैं। यहाँ पे ब्लॉक करने का आखिर सिर्फ मेरे और वेग के पास है। हाँ सही बात है भाई। ग्रुप हमारा है, जिसे चाहिए उसे बंद कर सकता है। तू अपना घुटना मत चला। और बता रही है, देख रहा है इस, यही लोग याद करते भी होंगे भाई, और कौन ही याद करेगा इनके अलावा? तू ही बता, इनके अलावा और कौन याद करता है? तू अपना घुटना मत चला, वो बता रही है ना। अच्छा ऐसा है, बढ़िया भाई, थोड़ा सा सुना देना चाहिए था। तो गाइस मेरा नाम है, और तुम्हार लिखती हूँ। वैसे वो यूके लिखा हुआ है। मैं यूके की विकास नगर में हूँ। देख लो दोस्तों, यूके की विकास नगर में अगर आप जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये क्या था? बेकार तो था भाई, मजा बिल्कुल नहीं आया पढ़ने में। घर वालों ने पढ़ने भेजा मुझे, और भूखे मरती हूँ। पढ़ ले। कोई नहीं, इससे गंदा भी कर सकती है। हाँ भाई, एक्सपेक्टेशन तो ये भी नहीं था। मूड खराब कर दिया। इस सुअर का नाम नेहा तुम्हारा है, और इसका भी नसीब खराब है जो इसने हम जैसे भाई मिले हैं। हाँ भाई अब। ढूंढा तो था भाई, सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया। इसको सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया। बाकी इस सुअर की इन गेम आईडी आप नाम से खेलना, खेलना है तो खेल सकते हो इसके साथ। कराई तो थी तुझे। हाँ सही बात है, वही तो। रिजेक्ट भी नहीं। अबे रिजेक्ट ही मिल गया था, सामने वाले ने मना कर दिया। किसी और को ढूंढ के देना पड़ेगा। हाँ वैसे मैं प्रूफ हूँ इस सुअर के सामने, नूब हो जाती हूँ। ओ प्रो है। प्रूफ लिखिए, प्रूफ। प्रो कोई प्रूफ लिखा है। बेचारा विवेक लाइव कर रहा है, वरना उसके भी यहाँ बुलाकर। भाई लाइव कर, लाइव पे आ जाता मैं। सामने वाले, यानी उसके भाई ने। हाँ हाँ, उसने बोला कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। सही बोल रहा पकवान, तो उसके भाई ने। बुला ले। रुक जा, लाइव की ये भेजता है लोग को। देयर कॉपी। उसके भाई ने बोला भाई मेरे पे टाइम नहीं है,
सामने से रिजेक्ट कर दिया सुकुना को भी, तो अल्फा निकला। सुकुना का भाई तो अल्फा निकला। मुझे लगा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन पता नहीं कैसे ऐसे हो गया। ये सुअरों ने देखा भी नहीं है, ये लोग कितने ज्यादा बिजी लोग। आ जाओ स्टार्ट करते हैं भाई। Agreed. This is likely a consequence of outdated railroad data. एक्सीडेंट हो गया भाई, The टूटी हुई discrepancies पटरी पे ट्रेन between the चलाएंगे, old वो भी data दबी and हुई present ट्रेन थी ये। reality are far greater than I anticipated. Fortunately, our crash landing has at least brought us much closer to the town. According to the data, anyway. Your data had better be right this time. I can assure you, it certainly is. Please look this way, and you will see a Kresnik's torch. It seems our ill-fated train ride was a blessing in disguise. We have taken the shortest possible route. अरे वो सुकुना ने ढूंढा था ना, इसलिए उसने मना कर दिया। शायद उससे अपनी बहन पे भरोसा। हाँ सही बात है, सही बात है। Rest यही तो assured that बात I है। will take user preferences into account next time I plan a बिना route. देखे मना कर दिया। Next time, I will get it right. उसने एक बार भी देखना भी नहीं चाहा, वैसे ही मना कर दिया। ओ भाई साहब खुल गया, लेकिन ये बॉर्डर लग रखा है। ये देख मैप। ओ रेजोनेंस विद क्रायो कर सकते हैं। ये क्रायो की पावर। ये वैसे रिवॉर्ड भी मिलेगा, देखते क्या क्या है रिवॉर्ड में। मैं ये क्वेस्ट स्टार्ट इसलिए किया था ताकि ये जगह अनलॉक हो। बिना ये क्वेस्ट स्टार्ट किए जगह अनलॉक कर ही नहीं सकते। वैसे जगह नॉट बैड है, इतना बेकार नहीं बनाया। Excuse me, is there an inn nearby? I'm sorry, but they've all closed. लग तो गजब रहा है मैप। हाँ भाई, अब देखते हैं। इसके अंदर मॉन्स्टर भी खतरनाक खतरनाक आया, देखने में मजा ही आ Sorry to जाएगा। interrupt. We're looking for a place to stay. I can't even afford to warm my own house, let alone run a business. Excuse us. Is there anywhere we can stay around these parts? I'm afraid not. You'll have to try your luck somewhere else. भाई सब लोग भगा दे All रहे we वे। can do is wait for the next इज्जत ही नहीं shipment है of कुछ। Kresnik Crystal to get here. सब भगा दे रहे कि नहीं, रहने नहीं देंगे। Hi there. Do you know if there are any inns still taking guests in this town? Doubt it. They're probably all closed. No one has enough Kresnik Crystal to heat their own homes, let alone a business. अगर खतरनाक आया है तो बढ़िया है, वरना एक अटैक में ढेर हो जाए तो कोई मतलब नहीं है। खतरनाक पता नहीं भाई। वो नया आया ना, एबिस आया है, उसके अंदर है। बोल तो दिखाऊं तेरे को, न्यू रीजन है ना, इसलिए भाव नहीं मिल रहा है। हाँ भाई, कोई भाव ही नहीं दे रहा है। बोल तो दिखाओ ना एबिस, उसके अंदर आए हैं, इसके इस रीजन के मॉन्स्टर्स लेके आया। हाँ हाँ, ये करेक्टर आया है, पुल्स में आया है, ये मेन है, तभी तो भाव दे रहा है। अब बताएगा, इसी से बात होगी, बाकी तो एनपीसी भाव ही नहीं देंगे। I clocked you a while back. You adventurers or something? We don't get many tourists in inland Snezhnaya these days. Why is that? Because of the रुक जाए, snowstorm? कन्वर्सेशन के बाद दिखाता हूँ। In part. But the bigger reason's Project Stuja. Since it's Her Majesty's will, we have to put up with it whether we like it or not. Oh, sorry. I assumed it was common knowledge by now. Basically, the Tsaritsa is planning something big. Something that requires an enormous amount of energy. Even if they used all the surplus Kresnik Crystal in Snezhnaya, it still wouldn't be enough to meet demand. So, the Vetcha passed a resolution requiring all factories and households to reduce their energy consumption. The policy has thus been charmingly named Project Stuja.
meaning bitter cold. Bitter cold? So, like, it's gonna be a cold winter, folks? You're all gonna have to find a way to get through it? That kind of idea? Pretty much. When you're broke, you scrimp and save. When it's cold, you huddle together for warmth. There's always a way to stretch things out to make ends meet. Trouble is, if you stretch someone out like an elastic band for too long, who knows if they can ever bounce back. You know what? Come with me and see for yourself. चलो भाई कन्वर्सेशन तो आई थिंक खत्म हो जानी चाहिए थी. Can you please explain to me why the price of Kresnik Crystal has gone up by 1/3 again? Even as our purchase quota has gone down. You only come here twice a month. This won't even last us a week. The supply and pricing of Kresnik Crystal are based on current production. We fit 2 weeks. Oh, so our lives mean nothing to you? How can you expect... क्रिस्टल्स की कमी है दोस्तों What यहाँ market? पे. Which is why this... So if you hear... You... All right. But liaison... Oh, believe you me, I had the same reaction when I first saw the numbers. Still, you must understand that calculating these energy quotas is a complicated balancing act. They have to factor in population, town size, industrial application. Our top priority must be to keep the largest Kresnik's torch burning continuously. Only then can we sell the remaining crystal for household use, and in doing so, we must make sure that everyone is treated fairly. As our Fatui comrades said, they are only responsible for delivering the goods. They need to keep accurate records, and they do not have any authority to modify the rates or quotas. That's right. Our duty is to do things by the book. Tell you what, listen. I know how anxious and upset everyone is. As a matter of fact, I was just discussing it with the mayor. What we can do is open the lower combustion chamber of the Kresnik's torch to the public. You can come to me directly to register, and I will allocate time slots accordingly. I can't guarantee there'll be ample energy for household use, but we can at least make sure you'll be able to boil water and cook food each day. Let's hang in there and make this work together, all right? Fine. I don't see any alternative. So, this is Pratik Stuja in action, huh? Oh, no wonder nothing's open for business. People are barely getting by. You were looking for an inn, right? For your, Fae friend? Oh, Paimon's not a fae. Just Paimon. She must have caught a cold or something. We only just got to Snezhnaya, and we're still getting used to the climate. I have a small place in Sratomaros. I don't stay there very often, though, so it's pretty basic. हाँ But भाई if you're not एक picky, ही चीज पे पता you're नहीं welcome कितना to rest there कन्वर्सेशन for करेंगे. now. और It's ऊपर not से much, but I've got इसकी blankets चीज and a देख, जब warm इनको fire. बोलना रहता है ना Are you तो sure? फेस हटा देते हैं, क्योंकि जो बोलने वाला कन्वर्सेशन रहता है वो दिखाने नहीं चाहते, मुंह हिलाने का वही नहीं करना चाहते. All right then. This way. चलो कन्वर्सेशन खत्म हो गया दोस्तों. ये Hello. कैरेक्टर मिल I'm गया, Alosha. I'm a फोकट का hunter. कैरेक्टर मिल गया. उसको ना यही दिखा रही थी क्या? एनिमेशन करने में आलस आता है. हेलो सुकुना, आजा तेरे को एबिस दिखाता हो. स्पाइरल एबिस. ये देखो तुम्हारे भी आ गए. आजा तुम लोग को स्पाइरल एबिस दिखाता हूँ, देख के मजा ही आ जाएगा. 9 से करता हूँ क्योंकि वहां से ही कुछ नए लोग ज्वाइन हुए. यहीं से आया होगा. मैंने सारे क्लियर कर दिए. लास्ट वाला तो वैसे भी कभी क्लियर नहीं हुआ. जिस दिन वो लास्ट वाला क्लियर कर दूंगा ना 6 स्टार, उस दिन भाई अलग रहेगा. ये देख कुछ नए लोग ये आए हैं, और ये भी कुछ नया सा आया, और ये कुछ आया. तो आज आप शुरू करता है. कैसे टीम्स की तो वैसे भी जरूरत नहीं है, सारी टीम्स खतरनाक ही है. लेट्स गो. बीच में भी
बीच में भाई ने व्हाट्सअप खोला था, चैट पढ़ी थी, मजा आएगा। भाई भाई ये लोग लेट हो गए। नेहा की गिरने कूदने वाली फोटो भी दिखाई थी मैंने। जा नेहा तेरे फ्रेंड पीछे जाके देख। नेहा तो भाई बिजी रहेगी कहीं और पे। यहाँ कहाँ से लाइव कोई चैट्स पड़ेगी। रुक दिखाता हूँ, ये देख। Big mistake. ये वहाँ नए वाली जगह की है। मतलब ये तो इतना डैमेज दे ही नहीं पाएंगे। जूम करके दिखा पाता तो जूम करके दिखाता। ए शकल दिखाओ बे। Our bond is strong. कुछ उड़ने वाले पंछियां हैं, कुछ खास तो नहीं दिख रहा। और कुछ न्यू लोकल लेजेंड तो आए ही होंगे। Be silent. Night falls. Big mistake. ऐसा लगा फ्रेंड्स की बेइज्जती कर रहा हूँ मैं इन चोरों को मार के। Enhanced animal module. Close your eyes. Be silent. To dust. जा ना, रुक जा, जाती हूँ जरा। नूब लोग लग रहे हैं पवन को। अबे हाँ बे, कुछ मतलब दिखने में कुछ खास है नहीं। ये छोटे मोटे हिलेचर्स नहीं आते थे वो, क्या बोलते हैं उनको, वैसा ही है। चुंगुंग हुआ है। Defensive mode engaged. Annihilation mode. Going in. ले भाई, ये तो पूरा मतलब शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। मतलब लेवल कम था वो अलग बात है। मेरे पास है ही नहीं कुछ बिजी रहने के लिए। ओहो, तब एक काम क्या करना, लाइव स्टार्ट करता हूँ, आ जाया कर। Our bond is ये देख, strong. कुछ ये लोग हैं। Weather bomb. मतलब बिना मारे मर जाएंगे ये तो, ऐसा लग रहा है। हाँ Stay clear. इनको तो ट्रोल किया जा सकता है, ऐसा लग रहा है। Mark two. Top right there. ले भाई, अरे बाद में पहले उसे देख लूं। हाँ, किसे 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 देखने जा रहा है। हाँ, मिल गया का कोई। पहले उसे देख लूं। Laser bear. Installation chamber. Teamwork is true. खत्म। ये शुरू के तो कुछ नहीं है भाई, मतलब क्या ही है ये, मॉन्स्टर के नाम पे कलंक है। इसके बाद वाला जो लास्ट वाला था ना, वो थोड़ा खतरनाक था। उसको मारते मारते मेरा फ्लिंस मर गया। ये देख, कुछ ये लोग हैं, मतलब पेड़ टाइप के, इसलिए अच्छे दिख रहे हैं। अरे रुक जा, इसके एचपी कम है। ये देख, चौबीस हजार का डैमेज। ये देखे कि है। Absorption test. Close your eyes. The long sleep beckons. अरे पुल किया था, कुछ मिला ही नहीं। तूने बद्दुआ दी थी, मैंने देखा था। Everybody stand back. अब अभी तो सेंट्रोने निकली थी, अब उसके बाद तुरंत पुल करते ही निकल जाएगा। अरे इसे जो देख रही हूँ पागल, गलत। मेरे भरोसा करने ना करने से क्या फर्क पड़ता है। मैं तो अच्छे लग रहे हैं। हाँ ठीक है, रुक जा, बड़े में दिखाता हूँ। क्विट मारो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राइट, लास्ट वाले पे चलता हूँ। सेकंड लास्ट से स्टार्ट करता हूँ। अभी कुछ दिनों बाद वो भी आने वाला है। एक ये है और एक ये है। देखते पहले है ही क्या इसके अंदर। ये देखिए, यहाँ पे कुछ लोग आए हैं। ये मतलब समझ रहा है ना, ये बहुत सारे आते तो कुछ ज्यादा मजा आता, लेकिन अभी कम है, इनकी संख्या कम है। फर्स्ट वाले में ये देख, शकल देख बस इसके तो। ये तो अपने पुराने वाले हैं। ये देखिए नए वाले हैं। ये नए ने, ये नया है।
तो पहले वाले में ओके 1 2 3 4 बहुत कुछ। ये देख साले देख रहा है दोनों एलिमेंटल है, एक जियो है और एक इलेक्ट्रिक है। Defensive mode engaged. Teamwork is teamwork. ये देखने हाँ तेरे लिए ये देख कौन ये तो पुरानी है। Installation chamber deployed. Ultimatum protocol. Everybody stand back! Agree with. ये जब वो वाले एबिस में थे तब ज्यादा अच्छा लग रहा था, जब एक साथ 3 3 4 4 आ रहे थे। Be silent. Observe. You can fear the dark. To dust. पता नहीं क्यों भाई इसका फ्लिंस का लगता ही नहीं है, पता नहीं क्या रेजिस्टेंस है इसका। Be silent. To dust. हाँ भाई मतलब सही बोल रहा है। फ्लिंस से मारने में बहुत मजा आ रहा था जो भी हो। So we're doing this the hard way. ये देखे किया है। Watch this! Dreamers converge. Defensive mode engaged. Teamwork is dreamwork! ऐसे भी मैं दिखाता रुक जा। So we're doing this the hard way. Looking for trouble? Transfix. Surge. Installation chamber deployed. Annihilation mode. Everybody stand back! पीसी वाले लोग के भाई 2D गेम भी बना सकते हैं इसको। 2D में खेलना 2D में खेलो, 3D में खेलना 3D में खेलो, जो भी हो। ये मॉन्स्टर से ना बहुत बुरा मारा था। Observe. Do you fear the dark? Be silent. Do you fear the dark? I'll settle this. Dissipate. You on this. What? Animal tech 63 away. Observe. Close your eyes. Do you fear the dark? साला इसकी HP ही कम जाती है, पता नहीं वो शील्ड की वजह से इसके। Observe. मर जा फिर मर जा। Our bond is strong. Out of my way. No flaw. हाँ साले कूद जा, वहाँ पे कूद जा ना। To dust. Beware the creatures of the night. Are you quite finished? अबे मरा नहीं है। Lightning terrified.
शुरुआत में क्या ही हो तो बुलाते थे ये वाले मास्टर, बिल्कुल भाई, ये मरते ही नहीं थे। याद है जब हम लोग ने फ्लिंस निकाला था और अपने भी कोई पायरो नहीं था, तो ये जो रेजिस्टेंस वाले थे वो ज्यादा दिमाग खराब करते थे। और अब हम तो भाई ये होगा देख अब। एक बार जो तू जा रहा था वो करने, मतलब रहते थे ना हम हफ्ते में एक कोई तो मिशन करते थे, रेपुटेशन करने जा रहा था, वो वाला खतरनाक था। हम दो लोग मिलके उसको 6-7 मिनट में मारे थे। Pitiful. Overruled. Flame. Cleanup becomes initiated. Adventure time. Teamwork is strength. ये This is where you fall. Late red. Surge. इससे लगता है शील्ड बना के बच जाएगा। और फ्लिंस निकालने से पहले का कहानी का कुछ और ही पूछ। अरे फ्लिंस आने के पहले तो भाई मैं लिसा और बारबरा यूज करता था। है क्या वैसे ये मेरे को समझ ही नहीं आ रहा भाई। वो जिसके पास ना थोड़ा सा होता है, तुम्हारे तो वैसे भी घुटने में है, लेकिन फिर भी ये गेम है जिसके अंदर तुम्हें कैरेक्टर मिलने हैं, बिल्ड करने से ज्यादा इजी है। कैरेक्टर मिल जाएगा लेकिन तुम बिल्ड नहीं कर पाओगे। तेरे पास एक से बढ़ के एक कैरेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन तुझे बिल्ड करना भी आना चाहिए। ये गेम वैसा है। एक काम करते, इसी शील्ड टूटने से रहे, इसको छोड़ दो थोड़ा सा, यही कर लेते हैं। Our bond is strong. Go claw. ये Observe. Close your eyes. To dust. Observe. अबे शील्ड के आर पार नहीं मारता। वैसे उस दिन वाला हार आज भी वैसा ही है। Stand with me. Chew on this. Ding dong rubber bomb. Absorption test. Swirl alert 2. Be silent. Night falls. और डैमेज खा ले साले। Night falls. बहुत बढ़िया। जेंशिन ट्रेड नाम क्या है इसका? कौन मिलेगा? देख, मिलेगा तुझे कोई भी, लेकिन तेरे से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट वाले में कौन कौन है? नेक्स्ट वाले तो खतरनाक खतरनाक है भाई, सुअर ही बना देते हैं। मेरा तो ये दोनों कपल्स ने सुअर बना दिया था। बहुत बुरा मारा था, मतलब मारा नहीं था, मारने वाले थे। लास्ट तक तो पहुंचा ही नहीं। ये प्रीमियम लेवल वाले हैं, यहाँ तक तो पहुंचना ही मुश्किल है। चलो नेहा, तो मुझे एक बात बताइए, लड़का है कि लड़की है? जल्दी जल्दी बताओ। लगता है कन्वर्सेशन में बिजी हो गई है। छोड़ो दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मरना तो वैसे ही मुझे है वाले एबिस के अंदर। Flame, a moonlit night for all. Installation chamber deployed. Ultimatum protocol. I'm going in!
mode engaged. Teamwork is dreamwork! Overruled. Everybody stand back! वो देखो ये सुअर के ना एक बार के बाद एचपी जानी ही बंद हो जाती है किधर गिरे इधर। Surge. Cleanup sequence initiated. अब इसकी एचपी ही नहीं जाएगी, कितने मार लो कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई को। Witness my rise! Laid bare! Installation chamber. I'm going in! नेहा देखने में कितना आसान लग रहा है ना, गेम तो एफएफ भी खेला है। क्या लिखा है? अबे वैसे ही होगा और वैसा नहीं होगा तो उसमें बोल देना, हम बना देंगे उसे वैसा, तो तुम बना दो। ऐसा ही गेम खेलने की क्या जरूरत है? गेम तो एफएफ भी खेला है भाई, वो एफएफ की बात अलग है। इसके अंदर ना मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि एफएफ खेलना बहुत आसान है या फिर एफएफ सीखना आसान है, तुम्हें खेलना है कैसे है। और इसके अंदर ना तुम्हें स्किल्स की जरूरत नहीं है, तुम्हें लक की The जरूरत है। criteria for certificate exams are स्किल तो straightforward enough. स्किल्स तो What it सुकुना really में भी comes है, down to is whether you are willing to put in the time. थोड़ी सी स्किल्स की भी जरूरत पड़ती है क्योंकि लक तो सुकुना का भी अच्छा है, कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, बिल्ड नहीं होते। Close your eyes. Night falls. Be silent. Do you fear the dark? Our bond is strong! अगर टपल्स को उनके लिए पायरो चाहिए और मैं पायरो है नहीं मेरे पे, लाया नहीं है, मतलब है लाया नहीं है। Close your eyes. Night falls. Be silent. Observe. Do you fear the dark? देख रहा है साला, इफेक्ट ही नहीं था वाटर का। Being done! Animal Tech 63 away! Oh, need to make मर गया। adjustments. देख रहा है इन सुअरों को, देख रहा है, Ass and avalanche. देख रहे हैं सुअरों को, देख रहा है, मर गया भाई। वैसे भी सारे डीपीएस और सपोर्ट मर ही गए हैं, आई नो बचिए। और फार्मिंग एचपी देख रहा है कितनी कम की जा रही है। कल तो मार भी दिया था टाइम से, 2 स्टार इन्हीं को मार के मिले थे। देख रहा है भाई, देख रहा है। एफ20 में इनका भी, एफ20 में भी चालू है। Lash attack! Enough! मार दिया बेचारी को। Cool. बनवा देंगे तेरा एक वन एंड ओनली। चल भाई, हाँ देखते हैं वो तो। एक मिनट सोचनी थी ना इसके लिए, मुझे सोचने मेरे पास कोई ना कोई तो होना चाहिए। हम्म हम्म अबे तेरे तेरे उसमें तो है पवन, क्या बोलते हैं, जय को क्यों भूल रहा है भाई? जय से बात करा दे। जय जय है और लूसी उसी कितने लोग हैं, बहुत लोग हैं, किसी उनका ही भला करा दे। हाँ भाई बिल्कुल, मैं तो बोलता हूँ हो ही जाएगा।
मजा ही आएगा, बहुत मजा आएगा। मैं बता उस दिन वही सोच ही रहा था, ये बोल रहा था ना, उसके बाद मैं सोच रहा था कि और कौन है हमारे जानकारी में, तो मुझे जय का याद आया। फिर मैं बोलना ही भूल गया। लूसी शायद नहीं मानेगा। क्यों भाई, लूसी क्यों नहीं मानेगा? सौरभ से बात करवाऊं? हाँ भाई, करवा दे, किसी से भी क्या ही जाता है। किस लिए? वो तो तुम जानो और जय जाने, लेना है कि नहीं। सॉरी। जय से बात करते हैं, जय से। जय और सौरभ तो बचे ही है। Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. सब चलेंगे भाई, बस कोई भी मिल जाए। Thank you for completing कुछ भी मिल जाए बस। Ad Astra Abyssosk. Welcome to... स्पेसिफिक स्टेट रिक्वायर्ड नहीं है इसको, कोई भी स्टेट चलेगा। All geared up. ये कैरेक्टर देखा, यही आया है अभी। अबे स्टेट की बात कर रहा हूँ, इंडिया के स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं दूसरे किसी टेररिस्ट, क्या बोलते हैं, कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। Absorption test. Animal hypothesis. Let's test my hypothesis. Come on, keep up. Yeah. Crystalline Adagio. Pirouette. Together. A spot of tea time interview. Here, boy. One step. Swirl. Mark 2. ये देख पवन, Let's begin. How tiresome. मुझे लगता है ना Stay clear. Animal ये hypothesis. सेंट रोने को ना निकाल के उसी को निकालना चाहिए था। Crystalline Adagio. Take a break. Let's test my hypothesis. Shadow me. One down. It's doggy dog. एक बार और बॉस देख लो। Boss of the snowflakes. Potted duck. Come on, keep up. चलो, एक बहुत वॉच टाइम दे दिया तुझे, अब चलता हूँ। ठीक है भाई, सब मिलते हैं फिर। यहाँ से प्राइवेट मैथड शुरू होता है। दे दे भाई, जय का नंबर दे दे, जय से बात कर लेगा। जा तो मार, जैसे हम जैसे बात कर ले। वो आज मंडे है। हाँ, डोमेन डोमेन किधर है? डोमेन 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 जीरा। चलो भाई, सब इनको पीट के आते हैं।
देख रहे थे सब गायब। नहीं, खेलूंगा नहीं मैं आज। कोलंबिना तो मरी पड़ी है दोस्तों। कौन सी चैलेंज वाली वीडियो कल बनाऊंगा। With the marrow of the three moons in my hand, behold the false moons fall! Surge. Defensive mode engaged. Preparing for gusto. Swirl, Mark 2! Observe. Close your eyes. To dust. Be silent. To dust. Entropy. Installation chamber. Animal Tech 6308! Close your eyes. Be silent. Night falls. Close your eyes. Reverse. A new moon rises. Defensive mode engaged. Annihilation mode. Absorption test. Animal hypostasis. So I'd rather wallow in this rotten, decaying world! लेट भी मिला। सबसे ज्यादा शॉकिंग तो ये है, मेरे को 2 चाहिए था और 2 ही मिले। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेवल ऑफ बेस्ट नीड। वैसे इसकी जरूरत तो नहीं है कुछ खास। 10 करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो भी नहीं समझ में आता। वैसे अब किसकी जरूरत है? मुझे इसको भी लेवल अप करना है, और इसके अंदर सबसे पहला लेवल अप किसका? वो मतलब ये चाहिए टैलेंट का आइटम तो है मेरे पास। इसके बाद 2 और चाहिए और 2 और चाहिए, और इसको मुझे फुल करना है। ओके, पहले ये वाला करना है, ठीक है। मतलब इसकी जरूरत तो पड़ेगी आगे के टाइम पे। चलो फिर शुरू करते हैं। मतलब क्वेस्ट तो करा नहीं है, डायरेक्टली वैसे ही चल के मार के आते हैं। और वैसे मेरे कैरेक्टर्स की हेल्थ भी कम है, हो जाना चाहिए। वैसे हेल्थ से क्या ही फर्क पड़ता है, 150 की अच्छी बहुत है। कोलंबिना लगभग खत्म ही है, जिंदा के नाम पे तो कुछ है नहीं। वैसे ये कि पहले अटैक में ही ना खत्म हो जाए। Installation chamber. Animal Tech 63. Be silent. Close your eyes. ज्यादा अंदर चला गया भाई सब, कुछ ज्यादा ही जल्दी चला गया। आजा। Be silent. Night falls. Surge. A moonlit night for all. Observe. Night falls. Defensive mode engaged. Stay clear! मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। 150 एसपी तो बहुत होता है।
relationship. Thunder! Be silent. This world, a fleeting shadow. Your verdict is decided. Illusion cleanup sequence initiated. Observe. Shattered. Close your eyes. The night comes. Euthymia crumbles before me. लॉक तो ऐसे कर देते बहुत काम का ही है। चलो ये अच्छा है कि यही चाहिए था और यही दो मिले हैं। नहीं बे ये नहीं चाहिए था। गजब। जो नहीं चाहिए था वही मिले हैं वैसे तो। ओ किधर गया किधर गया किधर गया। I want another one. I love the snow. It's so beautiful and peaceful. And I can have snowball fights with the Kuhenki. Shall we have one now? Huh? Paimon's getting nice and toasty. Oh, wait. Paimon only introduced herself so far, didn't she? This is Paimon's best friend, the Traveler. Good to meet you. I'm Alosha. Most travelers find the Snezhnayan climate to be a shock to the system at first. But as long as you keep yourself warm, you should be fine. Still, you should keep an eye on your condition. When people are too quick to dismiss a cold, it can easily end up turning into something more serious. Don't say that! Paimon's too young for chronic health issues. They aren't in town right now, and they won't be back anytime soon. The train station has been closed ever since these power shortages began. I do a lot of hunting, so I spend most of my time exposed to the elements. But even the animals wouldn't survive long in a storm like this, let alone a hunter. Nothing to do but sit tight in town until the weather improves. I get that you're in a hurry, but even if the station were open, that doesn't mean there'd be any trains. We could end up stuck here for a long time, I'm afraid. What? Your own train? Wait, hold on. That train? The one that suddenly fell out of the sky and crash-landed on the ice? Oh, we got lucky and found it in a cave. Oh, then our luck ran out and we had a little accident. Pretty crazy for a random find in the mountains. Well, as long as your train's good to roll, you might get to Snezhnagrad after all. I've been doing some digging recently. Turns out, the real reason for the current energy crisis in Stratomaros is that some of the supply is being seized for a private stockpile. But to expose what's going on, I need to catch them in the act. So, I'm heading off to catch a rabbit. Huh? Wait,
rabbit stole the crystal? It's a figure of speech. Real rabbits couldn't pull this off. They'd prefer carrots to Kresnik Crystal anyway. Shishkin, Mr. Positive Attitude, let's all get along now, shall we? Him? Really? Paimon never would have guessed. Huh? You're coming with? Oh, okay then. Just give Paimon a second to get ready. Alright. Guess there's no point pushing myself. Paimon will stay here and hold the fort then. Be careful, you two. Oh yeah, there's one more introduction to do. Tagarin, get in here. Oh, a doggy. Oh, angry doggy. Oh, Tagarin doesn't like being petted then. He likes to think he's above that kind of thing. He's my hunting partner, so he'll be joining us when we head out. Carrots aside, we'll need to stay completely undetected. We can't risk spooking our rabbit, or there's no telling which burrow he'll scurry back into. First, we need to find a way into the train station and see if we can find any real freight data. Shishkin's figures can't be trusted. Then, we get Tugarin to catch a scent and find out which way the crystal went. What are you eating? Oh, check it out! When you're all out of carrots, try turkey! Good doggy! Good doggy! A fellow dog lover, huh? Yup! And rabbit lover! Carrots are great too, you know. Good to know. Eat up, Tugarin. We got a lot of work to do. ये क्या है भाई? 2D गेम अगर मैं उतर गया तो गिर जाऊंगा? नहीं गिरूंगा। फिर क्या? चलो फिर। एक गिरा के दिखाओ भाई, देख रहे हो? चल भाई। Wait. मुझे लगता नहीं कि किसी ने ऐसा ट्राई किया होगा ऐसे नीचे गिरने का। ओके, छुप के जाना है इनसे। इसे ट्रैक कर रहा है, वाओ। सबका ध्यान अपनी तरफ लिया। बस ऐसे एक डॉगी चाहिए। Nice work, Tugarin. Come on, we'll go around. This way. We'll enter from the upper floor.
हेलो अंश कुमार भाई साहब, स्वागत है आपका हमारे लाइव स्ट्रीम में। आशा करता हूँ कि आपको ये गेम अच्छा लगेगा, या फिर आप ये गेम खेलते हैं पहले से। सुबह में क्या? There we go. A freight list. Straight from the Fatui. So Shishkin won't have had the chance to doctor the figures. Looks as new as the नहीं day भाई it was साहब, आज printed. वो नहीं I खेलूंगा। guess no one bothers reading these क्या unless they खेल? have रितेश तो आ ulterior गया है। motives. रितेश तो खाली है। ठीक है ठीक है, रितेश खेल लेगा, और रितेश तो Yeah, ऑनलाइन ही this है, is all खा we पी के need. लेटा हुआ है। Come on, let's get out of here. Then go track down the crystal. Tugarin's a keen hunter, and catching rabbits is his specialty. Anywhere there's a stove, there'll be the scent of crystal. That's normal. लाइव भी हूँ? लाइव नहीं, वो नहीं खेलूंगा। But if he picks up the scent of crystal आज somewhere and मूड there's नहीं no है। stove around, that's how we know something's up. This must be the rabbit's warren. Good job, boy. Sure enough, there's a tunnel. You stay here and keep watch. I'm gonna take a look inside. Thanks for looking out for us. लाइट Things are बंद getting कर दे। tougher by the day. No need to thank me. It's my pleasure. Sure as Her Majesty the Tsaritsa watching over us, every sacrifice will be worthwhile. Let's grit our teeth until the blizzard passes. These days of hardship will be over soon. Maybe for everyone else, Liaison Shishkin. But for you, the hard times have only just begun. Huh? Who are you? What's the matter? I just had a question for you. Why, when times are as tough as this, would someone hoard more Kresnik Crystal than they could ever use? All the crates here are from the most recent shipment, but they weren't brought here for sale. Instead, they were secretly stashed away. Would you be able to shed any light on the situation, Mr. Shishkin? Me? Why, I have no idea. But look at how much there is! It's quite a godsend. Now there will be plenty to go around. This godsend was found in a cellar adjacent to your residence following a tip from Mr. Alosha. And this is only a fraction of what we found down there. We're still taking a full inventory. The official figures will be finalized shortly. I've always been grateful for your efforts to mediate between us and the townspeople of Sretomaros. But now, Mr. Shishkin, it appears you were the source of the conflict all along. How could you do this to us? We trusted you to have our backs. You've been lying to us this whole time? Hey,
I owe you all an apology. I'm sorry. I'm so very sorry. This isn't who I am. Please believe me, this was a one-time mistake that I will never repeat. We all know how difficult life has been since Project Stuja came into force. Energy is an increasingly scarce resource. People everywhere are getting desperate. But some places have been hit harder than others. I grew up in Alatir, a small village with no train station. Deliveries of Kresnik Crystal have ceased there entirely. If nothing is done, they're all going to freeze to death. You know as well as I do how downright impossible it is to buy Crystal these days. The thought of my poor mother and father, with no one to help them, oh, I felt so afraid. I watched as energy grew scarcer by the week, all the while knowing that their lives were at risk. Then one day, I looked at the Crystal shipment in front of me, and a terrible, selfish thought entered my mind. Looks like I'm just not cut out to be a criminal. I'm so sorry. Once the Fatui have finished their count, you'll see that the numbers match their waybill. I have the official Snezhnayan quotas here. Anyone who has already purchased energy, please make your way over here to correct your transactions. I'll make a batch purchase of Crystal worth 3 months' salary for you all to use free of charge. As for Alatir, I'll think of something else. You don't have to go that far. Yeah, owning up to your mistake is enough for me. You've done plenty of good for the community in the past. I'm not looking for a handout. Drop the act. You claim this was a one-time mistake, but the real reason there's only one shipment's worth of stolen Crystal in your basement is that you have an accomplice. Reporting in, sir. We've conducted a full search of the mayor's house. As expected, we found many crates full of Crystal, half of which were still in their original shipping containers. This wasn't your first time at all. You've been colluding with the mayor of Stratomeros for a long time now. The train station's currently out of service, but it does open for a short window every time there's an energy delivery. And every time a train pulls in, you're there on site to take inventory and oversee the workers unloading the cargo. The mayor handpicks said workers. Per his instructions, they transport the Crystal by tunnel at night to the mayor's house, and he sells it out of town. But since he can't get the goods out of town by train, he had to arrange an alternative method of transportation. This meant slower sales, which gave me plenty of opportunity to catch him in the act. Wait, the mayor's involved in this too? Preposterous. What proof do you have of any of this? Basic math. I've spent a lot of time lately counting carriages as the snowstorm rages. Counting carriages? What? The energy consumed by a train depends on its total weight. And since energy is a limited resource right now, it's fair to assume that every carriage is packed full. So, if we take the energy required for the Kresnik's torch, add the sales figures you provided, then compare that figure to the train's theoretical cargo capacity, guess what? The numbers never match. It's always off by 1 or 2 carriages worth. This time, you set a new record. 3 carriages missing. You mean to tell me that you sat around outside, counting carriages, in this weather? I'm a hunter. I have 2 options. Hunt or starve. Well, I've heard enough. The evidence speaks for itself. Take Shishkin and the mayor into custody and escort them back to Snezhnagrad. You cocky little brat! Ruining my business! Just you wait.
Yeah, something felt off, so I just followed my gut. Math isn't my strong suit, though. I'm lucky my dad made me learn enough to get by, but all this number crunching was a million times harder than the aim and fire work I'm used to. Thank you for your assistance. You're a brave lad. Shishkin was quite the cunning criminal, as I'm sure you can tell. He did all of this right under our noses, and we never suspected a thing. A wolf in sheep's clothing. He had everyone fooled. Even with that sob story he fed us. He was probably trying to keep the mayor out of it, not just mask his own motives. Without the compelling case you put together, even I might have fallen for it. Alosha, was it? Tell me, are you really a hunter? We can go find some wild animals if you want. I'll fire off a couple of shots, and you'll see whether I'm the real deal. I didn't mean to cast suspicion on your identity. It's just... well, I'm sure you've heard of the Rokot. Recently, they've been recruiting people with your kind of talent. They hide in plain sight under false identities, working against Project Stuja, sometimes directly opposing the Tsaritsa herself. They aren't a violent organization, and their goal is to improve the lives of the common folk, but still, as a member of the Fatui, I wouldn't be doing my job if I didn't keep tabs on them. First I've heard of this. I don't really keep up with what goes on in the city. All I know is, people who don't mind their own business in the city end up paranoid about everything. As for me, I just couldn't stand Shishkin. I'm from Alatir myself, and I can tell you, nobody's lived there in years. Why would an abandoned village need Crystal? Of course, no one really cares about the fate of that place. I'm guessing today is the first you've heard of it. I see. It does sound quite tragic. Really. Well, thanks again for your assistance, and I will report this incident to Looks like it's my turn to brush up on math now. I never liked it as a kid either. Don't mention it. Isn't the soldier overseeing the delivery supposed to verify the quantity of the goods? Was he just... Excuse me. I'll take a share of Kresnik Crystal, too. Thanks. I need to take a detour before we head back. There's someone I have to deliver this crystal to. Hang tight for a moment. This old lady, she doesn't really know who's who anymore. Oh, grandson. It's so cold today. You must be freezing. Ma'am, it's me, Alosha. Alosha? Alosha who? You know me. I came by earlier today. Cleaned the ashes out of your stove, gave you some warmer bedding, and washed your back. I'm sorry, I don't remember. Now, how often do I get to see my grandson? Come on, take a seat and relax while I fix you something to eat. It's okay. You just rest. I'm fine. Oh, you. It's nice to come and visit your old granny once in a while, isn't it? Sretomaros, a good town. All sorts of things to do and people to meet. And the local officials are good to us. Sit down, come on, take a seat. I still have some fruit left. Let me get it for you. Please, don't get up on my account. You need to rest. Where's the fruit? Right under the basket by the door.
Or maybe it was on the bedside cabinet. Well, grandson dear, do you like it? Very much, ma'am. It's delicious. Good, good. Wonderful. You don't need to save any more for me next time, all right? Fresh fruit is hard to come by at the moment. You should eat it as soon as you get it. Oh, I don't need it. I'm fine. But if you like it, come back for some more soon. Some kind soul must have given these to her. But she always saves the nicer things for special occasions. I met her at the market back before her health began declining. She was a lovely old lady. We're from the same hometown. Not many people have heard of Alatir, and if they have, it's usually for all the wrong reasons. There's a gang of highwaymen that came from there. Now that it's an abandoned village, it's rare to find anyone who shares fond memories of our hometown. So after we got talking and realized we were from the same place, we decided to keep in touch by letter. I first learned of Sratomoros's energy supply problems from a passing comment in one of her letters. Then, after her health went downhill, I started visiting more often to check in on her. The town's been in decline for a while now, but because of her memory problems, she thinks of it as the bustling, prosperous Sratomoros still in its heyday. That said, I kinda appreciate her optimism. There's not much of it going around in this world of ice and snow. It's fine. Everyone grows old. In Snezhnaya, some people believe that in your final moments, you'll sense a familiar presence by your side. You turn to look at them, but their face is blurry. So you focus hard, trying to make out who it is. And when you finally see their face, the Grim Reaper reaches out and takes your life. She still calls me grandson, though. So at least I'm not a blurry face in her world just yet. Come on, let's get back and see how Paimon's doing. Paimon, we're back. Are you feeling any better? Yep. Paimon's not cold anymore. But she's still a little dizzy. Flying probably isn't a good idea right now. Paimon might lose her balance. But Paimon's sure she'll be fine. It's probably just from getting hit on the head by that pile of snow when we first arrived in Snezhnaya. Her complexion's looking much better. Let's keep an eye on her. Sure. But enough about that. How did everything go on your end? Are you all set? Did you have any trouble? I'll explain. It's a bit of a long story. Jeez. You guys got pretty busy. Sounds like the liaison officer and the mayor were running quite an operation. Good riddance to both of them. It's a good thing you managed to catch them. So, you said the train station will open again soon, right? And everyone has enough crystal now? Yeah. Well, enough to survive at least. Project Snezhnaya isn't going away anytime soon. People will still have to scrimp and save to make ends meet. Don't know. The goal of Project Snezhnaya is to gather energy for the Tsaritsa, but no one knows where that energy's going. It's never been made public. The thing is,
We were told that the project would only last for 6 months, but time and time again, they keep extending it. Extending it? Does that mean that Tsaritsa's plan isn't going very smoothly? That's what everyone suspects. In principle, any proposed extension needs to pass by majority vote in the Snezhnaya Exploration. But even though opposition has been growing, any detractors end up caving in to political pressure from the rooster, Pulcinella. He's the chair of the Snezhnaya Exploration and a key figure in the voting process. He has the backing of many powerful and influential people. How come the Fatui are picking on ordinary people even here in Snezhnaya? I don't see it like that. Fundamentally, the Fatui will always think and act in the Tsaritsa's interests. But that doesn't mean they don't care about the plight of the common folk. The only reason Sir Tomoro still receives crystal shipments is because of a relief proposal put forward by the rooster himself. Then there's the Fatui soldiers providing support in every corner of the nation. Even the Northland Bank provided some mora for disaster relief, and they're as conservative and indifferent as they come. It's just that the rich and powerful in their fancy palaces live in a completely different world from us. There's always going to be some conflict when those worlds collide. Yeah, well, even though we all believe in Her Majesty the Tsaritsa, there are still many differences of opinion on how best to tackle the big issues of the day. Regular folk don't have an easy way of getting their voices heard in Snezhnaya, while the rich and powerful are either unwilling or afraid to speak out for all sorts of The Rokat, of course, organized, but so far, they've been doing their best to, like us. That's because we're adventurers. Sounds like we're going. So, I want to meet her ultimate. Wait, so. Sounds like you've heard of us then. I didn't realize I was in the company of giants. Honestly, we're all as curious as you are about what the Tsaritsa's planning, and why it has to involve us freezing to death in the snow. But getting in the same room as her won't be easy. The common folk aren't permitted to meet her at the best of times, and right now, she's probably not even in Snezhnaya. Word is, she's heading east on a campaign to slay a monster. Yeah, so you've heard of it. A wild, unpredictable monster with the power to summon snowstorms. It also absorbs everything around it into its body, so it's growing constantly. Now, it's so big that the Tsaritsa has deemed it the #1 threat. Luckily, as it grew, I'm sure that Tsaritsa, suffice to say, you won't be seeing her. Fair. Well, once it's open, we can... Whoa! That's gotta take a lot of manpower. Are you sure we can talk them into it? The Fatui aren't exactly spotless in this whole mess. Plus, we helped them out. Should be easy enough to negotiate. As far as I know, all the paperwork is dealt with upon manufacture. I've never seen anyone check it, so I wouldn't worry. Having a train makes everything much easier. We'll reach Snezhnaya in no time. I need to head there myself anyway. Got some game to trade for Mora. I know a good doctor in the city. I'll introduce you when we get there. Oh, thanks so much. Let's get a good night's sleep ahead of our big trip tomorrow. Drive carefully, all right? You don't want to end up in this situation again. Also, I don't think I've seen a train like this before. Is it a new model or something? Not a fan of small talk, are you? Anyway, take this. It's an up-to-date map of the Snezhnaya rail network. All the track switching is automated. So, as long as the train's moving,
You don't need to worry about collisions or anything. We'll leave you to examine the train's conditions yourselves. Fingers crossed nothing's broken. I doubt Sir Tomoros has any engineers with experience working on this model. Shouldn't be a problem. Thanks for everything. All right then. Have a safe journey. And make sure to check everything's working before you set off. Our destination settings have been applied. Let's give this thing a final once-over and then head out. Goggles, your time to shine! Affirmative. Running vehicle diagnostics. What's this? Engine, green. Wheels, green. Frame, minor damage, but no impact on function. Diagnostics complete. All systems nominal. Neat! Huh. Paimon still can't get over the fact that you just found this tech lying around in a random cave. I've lived in Snezhnaya my whole life, and I've never heard of an interactive, talking train autopilot. Strictly speaking, I wasn't designed purely to drive trains. Though I doubt you have any interest in navigating the practically unreadable operator's manual yourself. All configurations are complete. Should you require any further assistance, please call for the Eye of Grey. Away we go! Nope. Paimon's gonna find a warmer seat. Huh? What's going on? Oh no. What is this place? Traveler, are you okay? Paimon's still airborne, but it feels like swimming through thick, gloopy water. That's horrible! Just our luck. Of all the things that could have gone wrong. Alosha, you're Snezhnayan, right? Any idea what the heck this place is? It's called the Shadow Realm. A place where no wind blows, no light shines, and no elemental energy flows. Even time itself doesn't exist here. It's a world where everything seems to come to a standstill. I've only seen it a few times before, and this is my first time inside. It's a dangerous place. Most people who get sucked into the Shadow Realm are never seen again. And the few who do make it back, they're never quite the same. Huh? Then, what the heck do we do now? Oh, maybe Goggles knows something. Goggles? Great! Now
Hold it together. Let's not get ahead of ourselves. I heard a story once about the world of shadows. If it's true, there's a way to escape. We just need to find the exit. Come on, let's explore. Look at these Fatui! It's like they've lost their minds! Their shadows have been devoured. They're no longer amongst the living. I can't channel elemental energy here, but I have a few gadgets that still work. Wait! What's that blue thing? Is that... goggles? Guess we'd better find a way over. क्या मैं यहाँ से नीचे कूद सकता हूँ? ओह। अब लगा तो नहीं था कि गिर जाऊंगा, लेकिन फिर भी गिर सकते हैं यहाँ से। This is the last one. What do we do next? Play it by ear. Hello. I am glad to see the three of you safe and sound. For now, at least. But things aren't looking too good. Correct. We are now inside what is known as the Shadow Realm, the darkest space in the shell, where even the Most High is loath to cast its gaze. Time and space hold no meaning here. It intersects with the world of the Light Realm only rarely, like an air bubble that rises to the water's surface. We must leave this place before it sinks back down into the depths once more. Sounds like you have a plan. Yes. In fact, the very purpose of my creation was likely to... from the Shadow Realm. It appears that key data is currently inaccessible, but now is not the time to resolve that problem. I have marked the exit to the Shadow Realm for your convenience. In addition, I have prepared some equipment to aid you as you traverse the Shadow Realm, Traveler. It may well be one of my core functions. Scan complete. Construction in progress. Activation code? We once peered into the past from the ruins of the shadows. This is what remains of the Golden City, Hyperborea. ओ भाई साहब। Whoa! Now go. Arm yourselves with weapons of the spirit. Bring down the walls of the stronghold, and extinguish the flaming arrows of the wicked. Is this a gun? In the Shadow Realm, where humans cannot channel the elements, there once was one who, after much research and many attempts, found this to be the most effective means of attack. Let's go. We don't have much time.
Need a refill! When you encounter small obstacles, you can simply clamber over them. You can slide to navigate through low, narrow tunnels. Obstruction ahead. You may be able to use explosives nearby. Since elemental energy is unavailable in the Shadow Realm, ammunition is an important resource. For long-range targets, try using the scope to line up your shot. Many hostile units approaching. I suggest a new strategy. Take cover, and pick them off one by one. Defenses have been breached! Yeah. We are under heavy fire. I suggest taking cover to avoid enemy attacks, then waiting for a suitable moment to counterattack. More enemies detected. Try attacking with the newly unlocked assault function. Taking cover! Can't take much more! Taking cover! Can't take much more! Fall back! Taking cover! Can't take much more! Mind the rhythm! Fall back! Can't take much more! It's... Cover me! Over! Nice. Aim at the freeze mark and pull the trigger to move using the rope. Cover me! Reload! Light him up! Out of ammo! Cover me! Resuming search! Where's the... Reloading! Mind the rhythm! Cover me! It's over. Some supply points can restore a small amount of stamina. Press on.
You should be able to use the prime ice construct left here to cover long distances. I recommend using this grappling gun. Such devices were originally used to secure structures in the Shadow Realm. If you detach the connected hook, the grappling gun will automatically fire a rope to another nearby hook. Okay? So, we just remove this hook, right? Switch mode! Light 'em up! Reload! Time to catch my breath. It's over. Where's the back? Sprint at the prime ice launcher to reach high places with ease. Oh, wow, भाई. Take great care not to बहुत fall. बढ़िया, बहुत बढ़िया. Light 'em up! Out of ammo! Cover me! Reload! Over. Usable munitions detected. Frag crystal. Demolition time! That shit is ours! Charge! Can't take full back! Try this! The advantage is ours! Where's the back? Reloading! Where's the back? Shift your center of gravity and slide down.
The exit is right ahead. We are very close now. However... It's like they're trying to keep us trapped here. That platform and the carriages are swarming with undead patooey. Guess we gotta storm through. Frag out! Try this! You may find switching to assault mode makes your attacks more effective. Defenses have been breached! Can't take much more! Change of tactics. Nice. Cover me! Out of ammo! Cover out of ammo! Where are you? Cover me! Switch mode! State number 2. State number 2. We're almost there! Huh? Why is everything shaking so much? Looks like the Shadow Realm is about to sink back down into the depths. The exit is right here. You mean this weird bubble thing? Wait, how exactly do we... No time to think. We just gotta go for it. Looks like I was right. वैसे गन परमानेंट थी कंटेम्परेरी दिया था अपने को चलाने को. I can't believe the Shadow Realm manifested right on the railroad tracks. It's almost परमानेंट unheard बन of. रहती तो फिर मजा भी Lucky we made आएगा it आगे out. खेलने में और All ज्यादा thanks मजा to आएगा. you and that awesome gun. Ah, so you have heard of the Golden City before? Yeah, it came up a whole bunch in Nokrai. You're a pretty neat surprise in that sense, aren't you, Goggles? We had no idea they left cool gadgets like you behind. Make no mistake, it was a team effort. For a first-time firearm user, your performance was quite outstanding. Far beyond my expectations.
As Alosha said, it is highly unusual for the Shadow Realm to manifest in a place like this, but we should still watch out for similar dangers ahead. Oh, let's hope not. If anything else goes wrong with this trip, Paimon's gonna have train trauma for life! The Shadow Realm can appear anywhere, not just on the railroad. I am simply advising that we take sensible precautions. Now, if you wish to further calibrate and upgrade your firearm, you may do so over there, provided you have the necessary components. Please take a moment to catch your breath while I repair the body of the train. Amongst other things, this will ensure Paimon is a little warmer while on board. Oh, thanks, Goggles! You're a trusty train conductor! Yes, of course. And just like the Eye of Grey, I am sure it will be a great asset to you in your future adventures. If not the trustiest, then it will at least get the job done. Let's get some fresh air while the Eye of Grey fixes the train. Yeah, sure! Paimon wants to forget all about the Shadow Realm. It was so creepy in there. Stretching her legs might help take her mind off things. It's so quiet here for a train station. Not a person in sight. Just abandoned houses. Huh? So much for repair? You've swapped our train out for a whole new model! My plan was to restore the train to its original appearance per my records as quickly as possible. Now that the repairs are complete, the train offers optimized performance and a significantly improved trendiness level. Huh. Didn't know trendiness was a parameter. According to my calculations, parameterization is the most effective way for the Eye of Grey to understand trendiness. Hyperborea, huh? I'm sure I've heard of that in a story somewhere. What an incredible little gadget you are.
परमानेंट ही है, इसे लेके कैसे घूम सकते हैं? सिंपल रिमूव और वन, आई थिंक वन क्लिक करने पे मिलेगा ये लोड आउट। आई थिंक फाइट के बीच में स्लो करके मिलेंगे ये, नहीं तो नहीं मिलने वाले हैं। Snow this big only falls a few times a year. If I miss it, I'll have to wait until next year to run my experiments. So please give me some space. Yes. Be silent. Close your eyes. Wait. You keep them. I no longer need offerings. Huh? Huh?
perception test. Observe. Do you fear the dark? Shut up! Run. Be silent. Shut up! Run. Faster. Perhaps these treasures might be of utility to you on your journey. Please, I insist.
You keep them. I no longer need offerings. Ready to taste my fists? Wait. Show me what you got. Defensive mode needed. Stay clear! Observe. Close your eyes. To dust. Gotta. Let us have a modicum of patience for the richness and complexity of humanity. The wanton cruelty of the few is not worth our ire.
Wow, bro, nice, nice. What's your name? My name is Vivek. And your? समझ रहा हूँ चल क्या रहा है रजिस्टर कंप्लीट तो हो गया वैसे
Hen. What? Henma. Okay, Henma. Nice name. My name is Vivek. I hope you will lost next 50-50. Oh, I show you something. Nah. You said lost. I don't have pull, bro. See something. See my issue. I saw some. Uh, Tell me, my bro. Tell me to write, and the banner also. So your build for pull. क्या लिखा है? Build not pull. Oh, build. Okay. मैं अपना build दिखा रहा हूँ. See. It's Smafflins. मतलब he's Smafflins. It's नहीं. Yeah, nice weapon. Wait a second. आपका मैं मोला नहीं देखता हूँ 1 मिनट. ये weapon. The signature weapon. Great. Or one more. This is my second DPS. Rate my build. With white tassel. Weapon white tassel. And another one is not build. My bayonet. Benny's adventure team, assemble! Healer. Oh, I don't have healer. I think 32,000 crispy is not. And no. I don't have healer. I have healer, but he is a DPS. Columbina builds not good. I still building. Columbina and Inefa. 47 or 184, I think 50 rounds here, and 180 or 200 is enough. Weapon of Inefa. Yeah. Prospectors so well. And another one. Not build. Oh. Elementary mastery 750, 259. Another one. Bus. I have two. Oh, great build. Thank you. I saw some artifacts like yeah.
28 on 6.6 elementary 335. I have a it. See, 1, 2, 3, 4. Only 4. I have a 4 DPS and also something. Yeah. 33.4 and defense. Yeah, defense. One more crit damage. One more crit damage and then 33 to I think 40. Around 40. Yeah. Traveler's outfit. I think not Cry's quest. I do not Cry's quest and then get it. This is a reward of not cried. नहीं यार, not cried. एक मिनट, not cry. हाँ, not cry. Not cried quest reward. But it's not cool. It's oh, oh, I got it. No worry. Okay. I'll do some pulls later. For my 50-50. Wait. Can I get? I think 4 pulls. Yep. 4 pulls. Let's go, let's go, let's go. Can I get? Best of luck. Okay, bro. देखते हैं. My luck is not good, but I still try to get. No. One more pool remaining. Any 4-star character? और किसी काम का नहीं है भाई. एक 4-star तो मिलना ही चाहिए था. PT is just 13. Wait. My PT is 13 because the last one is Syndrome. 4 here or 10 here. 14. 14 and 4. 18. Now my PD is 18. I want Primos for full. Back to the game. Collect the coin and do a pulse. Tumhe your exploration. Okay, wait. Man, North Grass is 100% explored, but the new region, मतलब this one is not
if 70% explore and 90%, around 90%, 90% or 100%, 100% और not explored मतलब wait sorry भाई मुझे लगा कि कोई बाहर वाले कोई दूसरे इंडिया से बाहर का है। देखो सिंपल बताओ तो मैंने गेम खेला है, कम खेला है, ज्यादा नहीं खेला है। मैंने नॉर्थ ड्राइव पूरा एक्सप्लोर किया, बस जो नए वाले रीजन का वो एक क्वेस्ट है कुछ, तो वो आग के अंदर जाने वाला, पता नहीं वो क्या क्वेस्ट है, मुझे वो क्वेस्ट मिला भी नहीं। मैं करना चाहता था उससे क्योंकि मुझे एक बॉटल चाहिए था आर्टिफैक्ट बनाने के लिए। यहाँ वाला ये यहाँ 79% एक्सप्लोर है, ये 79%, ये 100%, ये भी 100%, ये 93% एक्सप्लोर है, और ये 100% एक्सप्लोर है, ये 100% है, ये भी 100% यहाँ पे दिख रहा है, मुझे पता नहीं था। ये 79% एक्सप्लोर। वैसे एक्सप्लोरेशन करने में अच्छा लगता है, लेकिन जब एक्सप्लोरेशन को ऐसा मान के चलो कि हाँ एक वो हो गया कि करना है करना है करना है, तो वैसा करना नहीं पसंद। ऐसे घूमते फिरते एक्सप्लोर करना ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये एक्सप्लोर कुछ खास नहीं है। और ये रहा अपना रेगिस्तान, यहाँ पे तो भाई चढ़ना ही बहुत ज्यादा बेकार है। इतनी सारी पहाड़ियाँ, इतने सारे पहाड़ियाँ है कि ये भी एक्सप्लोर नहीं। 21% और 19%, अरे 25%, और यहाँ पे 25%, 21%, 38%। सुमेरु भाई बहुत ज्यादा बड़ा है सुमेरु। तो यहाँ पे कुछ खास एक्सप्लोरेशन नहीं है। यहाँ पे है मॉन्स्टर का एक्सप्लोर कर रखा है, लेकिन ये 41% ही प्रोग्रेस कर रखा है। ओ नॉर्ड क्राई, नॉर्ड क्राई तो पूरा एक्सप्लोर है। ये रहा 100, ये रहा 100 नॉर्ड क्राई तो पूरा 100% है। बस ये है कि यहाँ पे ना एक चीज जरूर दिखाता हूँ, वो पता नहीं कौन सा क्वेस्ट है। हाँ ये वाला, ये जगह पे कैसे जाना है वही नहीं पता। कोई तो क्वेस्ट है जो कि मुझे मिल नहीं रहा। मीन कैन यू रेट माई मोलानी, ओके ब्रो। अरे नहीं 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 नहीं, पार्टी सेटअप में नहीं जाना था। तो बहुत दिन से किसी फ्रेंड के 8855 69161 ओके। चलो भाई सब देखते हैं इनकी मोलानी कैसी है। वैसे तो भाई मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही मोलानी के फैन है। ओ भाई साहब 6291, 32,000 की वो भी है। एचपी भी 32,000 की है। वेपन कौन सा? 5 स्टार का सिग्नेचर वेपन दे रखा है आपने। 90 लेवल तो होगा ही। 88.2 का क्रिट डैमेज तो यहाँ से आ रहा है। और शुरू करते हैं यहाँ से। क्रिट रेट और क्रिट डैमेज और एनर्जी रिचार्ज भी 11.7। नॉट बैड, बढ़िया ही है। एंड फेदर 28.0। एलिमेंट्री मास्टरी भी 65 गई है। क्रिट रेट में जाता तो और अच्छा रहता। मतलब जैसे क्रिट रेट वैसे भी 60 है, तो कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस कहीं ना कहीं तो किया ही होगा। 24 मतलब काफी बढ़िया है। एचपी भी है और क्रिट रेट और क्रिट डैमेज भी है भाई साहब। 24.9 और क्रिट रेट 7.4 का। तो किधर गई भाई? ये बाकी है ना। हाइड्रो डैमेज बोनस भी दिया है भाई साहब। क्रिट रेट 12.4 और क्रिट डैमेज 13। हाँ डैम। 9.7 एनर्जी रिचार्ज और एलिमेंट्री मास्टरी। इसमें कहाँ कहाँ चला गया? 3 नहीं, हाँ 3 तो आई थिंक क्रिट रेट में गया है, एक एलिमेंट्री मास्टरी में गया है, हाँ ये डिफेंस में गया है, कहीं तो गया है। लेकिन खतरनाक बिल्ड है भाई, मतलब बहुत बढ़िया है। क्रिट रेट क्रिट डैमेज भी है, एचपी भी दे ही रखी है, एनर्जी रिचार्ज भी है ही, और एलिमेंट्री मास्टरी भी है।
कॉन्स्टलेशन क्या है? C0 F2P 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 F2P। नाइस, बढ़िया है खत। और कौन सा करेक्टर आपके पास? न्यूलेट भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये चाहिए था यार मेरे को, नेफर चाहिए थी क्योंकि मेरे पास लॉमा है और नेफर नहीं है। एलिमेंट्री मास्टरी 836 प्लस क्रिट डैमेज और क्रिट रेट। वेपन आर्टिफैक्ट्स 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 क्रिट रेट, एनर्जी रिचार्ज भी है, बढ़िया है। एंड दिस वन, इसमें तो सब में ही थोड़ा थोड़ा गया है, बस क्रिट रेट को छोड़ के। एनर्जी रिचार्ज में गया है, क्रिट डैमेज और इसमें है, ठीक है। हीट अराउंड 1.5 मिलियन। कौन? मोला नहीं, मोला नहीं, 1.5 मिलियन भाई साहब, खतरनाक है फिर तो। 1.5 मिलियन भाई बहुत ज्यादा होता है। नाइस 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 बिल्ड ब्रो। आशा करूंगा मेरे बिल्ड्स भी ऐसे ही रहे, लेकिन क्या करे, मैंने 2 ही बिल्ड कर रखे हैं और बाकी बिल्ड करने जाता हूँ आर्टिफैक्ट ही नहीं मिलते हैं, क्या बताऊँ मैं। ये गेम हार्ड आर्टिफैक्ट की वजह से ही है बस, नहीं तो ये गेम को हार्ड नहीं बनाते। ये गेम में कैरेक्टर मिलना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल आर्टिफैक्ट बिल्ड करना है। Each time the snow और falls, अच्छा है, कुछ ना कुछ तो गेम में that हार्ड is the रहना ही चाहिए था, तो call वो of गेम कैसा Snezhnaya, जब उसके अंदर कुछ हार्ड ही नहीं the है। land whence I hail. आ जाओ भाई, रिटर्न चलते हैं। कुछ चंद प्रीमो के लिए इवेंट करके आते हैं जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं बनाते। मुझे एक ही इवेंट बहुत ज्यादा पसंद आया था जो कि हाइड एंड सीक का था। पता नहीं आप लोग ने उस टाइम खेला था कि नहीं खेला था, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा खेला था। मैं अपने दोस्तों के साथ दिन भर हाइड एंड सीक ही खेलता था क्योंकि सबसे मजेदार, मैं बताऊंगा जेनसिन का सबसे अच्छा मुझे वही लगा था, हाइड एंड सीक का इवेंट। हाइड एंड सीक का इवेंट ने इनको परमानेंट कर देना चाहिए था क्योंकि बहुत ज्यादा ही बढ़िया था वो, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैं मेरे दोस्त तुम पता क्या करते थे, हम 3 जाते थे, चौथा रैंडम आता था, तो क्या उसमें सीन ऐसा था कि जो चौथा आता था वो हमें ढूंढता था और हम 3 छुपते थे। तो भाई समझ जाओ फिर वो ढूंढने वाले की हालत क्या ही करते थे, वो ढूंढ ही नहीं पाता था। हम 3 यहाँ वीसी पे बैठ के और वो चौथा, और चौथा हम ज्यादातर किसी लड़की को आने का इंतजार करते थे। मैं, पवन और सुगुना, ये भी लड़की थी, तो हम इंतजार करते थे कि कोई और आए सामने और उसको परेशान करते थे। इसलिए हाइड एंड सीक बहुत ज्यादा पसंद था। मैं तो सोच रहा था मैं खुद का ही मैप बना देता हूँ हाइड एंड सीक का। बना तो सकते हैं वैसे, उतना हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बस। थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा और 3 स्टार 3 स्टार तो वैसे ही रीच होगा। हाँ हाँ, वो मॉन्स्टर वाला इवेंट भाई, जो भी हो मजा बहुत आया था। जो भी बोलो, ऐसा लग रहा था कि जेनसिन वाले ने कुछ तो अच्छा बनाया है। जितने दिन था भाई बहुत खेला, उसमें से एक फिलीपींस की और थी, उसके साथ भी खेला था, वो भी उसको भी दोस्त बना लिया था। फिलीपींस की थी वो और हम इंडिया के थे। मजा बहुत आया था, उसको भी बहुत परेशान किया था। और उसके अंदर पता है मैं लोगों को नो बोलता था, उसकी वजह से मेरा चैट बैन कर दिया था। मजा तो आया था, हाँ बहुत मजा आया था भाई। मैं पता है हम तीनों जाते थे तो हम मतलब एक टाइप से चैट में परेशान करते थे। तो उसमें क्या, मैं ज्यादातर नोब या बॉट बोलता था सामने वाले को चिढ़ाने के लिए। मुझे लगता है लोगों ने रिपोर्ट मारा और मेरा 7 दिन तक चैट ही बैन कर दिया।
उसके बाद बहुत दिन तक तो मैं शांति था। फिर वैसे तो हम वीसी पे रहते थे, एक रैंडम होता था, बस वो जो फिलीपींस की बंदी थी वो वीसी पे नहीं रहते थे, तो उसे समझ में नहीं आता था। तो एक मेरा दोस्त था, वो मेरी बातें बताता था कि हाँ मैं बोल क्या रहा हूँ। एक टाइप का ट्रांसलेटर था वो, ट्रांसलेट कर करके बताता, स्पोक पर्सन। ये स्टार्स किधर है बाकी के? भाई बाकी के किधर है? ये तो स्टार्स भी पूरे नहीं हुए। आर्कन क्वेस्ट नहीं, अभी तो कर ही रहा था, करूंगा। अभी यहाँ तक पहुंचा हूँ, मतलब आई थिंक स्टार्ट ही नहीं किया है, वो दूसरा वाला क्वेस्ट कर रहा था जो मैप अनलॉक करते हैं। आर्कन स्टार्ट करूंगा, आज नहीं करूंगा लेकिन बाद में करूंगा। 25,000 हायर स्कोर। हम्म। अभी तो बस क्योंकि मोबाइल में चार्ज है नहीं, मोबाइल में 6% चार्ज है, मोबाइल को चार्ज लगाऊंगा। मैं चैट मोबाइल से पढ़ रहा हूँ, तो मोबाइल को चार्ज लगाऊंगा तो भी कुछ देर बाद लाइव भी बंद ही कर दूंगा। उसके बाद कल करेंगे, पढ़ाई लिखाई करने के बाद। चलो देखते हैं, वैसे तो कंप्लीट होना चाहिए था, पता नहीं पिछली बार कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। इसके अंदर कॉइन्स ही कम है कि पता नहीं क्या सीन है। यूनिवर्सिटी 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 भी कंप्लीट हो गया। स्कूल कॉलेज तो कंप्लीट हो गया, बस यूनिवर्सिटी चालू है। यूनिवर्सिटी में मुंबई यूनिवर्सिटी है, वो भी कंप्लीट हो गया है, डिग्री मिल गई है। बस अब जॉब की तलाश है। बस ये है कि थोड़े से प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ। वैसे इनको तोड़ने भी स्कोर्स मिलते हैं क्या? अबे हाँ मिलते हैं। वाह, वन मोर। देखते 3 स्टार है कि नहीं। ओ भाई साहब, लास्ट में पता चला। काफी बड़े हो, हाँ 22 साल का तो हो गया, 22 ईयर्स का तो हो ही गया हूँ। आप कहाँ, मुंबई कॉलेज? आपका मुंबई से, मतलब मुंबई बोल रहा है यार, कॉलेज या स्कूल मुंबई बोल। मैं 11th छत्तीसगढ़। ओ छत्तीसगढ़ 11th में, बढ़िया है। वैसे भी 11th में कहाँ ही कुछ रहता है, मस्त टाइम पास करते हुए पढ़ो। पर 12th में पढ़ाई होती है। ठीक है, लगाने के लिए क्या? ओ ऐसा, सजाने का इनको। केयरफुल, लेट्स। ये क्या भाई, एक तरफ से इधर सेंड करो, उधर से। पढ़ाई तो 11th में भी होती है। पीसीएम लिया है भाई, मेरा तो पीसीएम भी था। मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो तीनों के, मतलब चारों के चारों थे। हमारे कॉलेज में कुछ ऐसा सीन था कि हमें बोलते थे कि तुम ये चीज छोड़ ही नहीं सकते, तुम्हें ये भी लेके पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा सीन था। हम लोग स्टैचू ऑफ 7, ओ भाई साहब।
मेरा पीसीएम भी था। और भाई उस टाइम और था भी ऐसा, लॉकडाउन खत्म हुआ था 11th, आधा लॉकडाउन और आधा कॉलेज में गया था। मतलब ऐसा था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलता था। 4 सब्जेक्ट, हाँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलता था। और जब लॉकडाउन लगा तो फिर पढ़ने की आदत तो खत्म ही हो गई थी। फिर डायरेक्ट 12th का एग्जाम ले, पढ़ाई नहीं जा रहा, याद ही नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी, और ऊपर से क्वेश्चन पेपर तो क्या ही बनाया था, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से क्वेश्चन पेपर ही नहीं था। 4 नंबर के क्वेश्चंस में एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन पूछ रहे थे। हम इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस पढ़ के गए थे। मैं तो भाई बस, जो रिवीजन कराते थे ना सर टीचर्स, वो खुद शौक थे कि भाई ऐसे कैसे क्वेश्चन पेपर बनाया। मैं तो ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि मैंने एक भी ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड नहीं किए थे। मैंने खुद से पढ़ा था, बुक से पढ़ा था, और जितने मेरे क्लासेस में पढ़ाया था वो पढ़ा था। क्योंकि भाई जितने भी ये लोग ने आईएमपी दिया था, एक भी नहीं आया था। बहुत मजा आया था एग्जाम देने में, जो भी हो। चलो 4% चार्ज, आज के लिए इतना ही करते हैं। ये देखो चैट में कुछ और ही चालू है। जेंशिन इम्पैक्ट तो दोस्तों मतलब, वाह, सेम नेम विवेक। वो भाई साहब का नाम विवेक है तो इसी बात पे सब्सक्राइब तो बनता है। सब्सक्राइब करो, फिर चलते हैं, मिलते हैं फिर आपसे फिर कभी। अभी तो क्योंकि मोबाइल में चार्ज नहीं तो जाना ही पड़ेगा। जिस मतलब मैं मोबाइल के 5G नेटवर्क से लाइव कर रहा हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं फिर। क्योंकि अभी तक तो 61 व्यूज है, मैं कब से लाइव कर रहा हूँ। लाइव ड्यूरेशन कितनी है? आई थिंक 3 आवर, 3:30 आवर। ओके, वो टाटा, बाय बाय, मिलते